चलो बच्चों, so let's read this question. Aldehydes and ketones will not form crystalline derivatives with A. Sodium bisulphite, B. Phenylhydrazine, C. Semicarbazide hydrochloride, D. Hydrogen sodium phosphate. Now let us write the key concept of the question. ये हमारे कंपाउंड्स तभी aldehydes या ketones के साथ crystalline derivatives बनाएंगे जब इनके पास न्यूक्लियोफाइल होगा to get attached to aldehydes and ketones. So we can write a nucleophile is a chemical species which forms bonds by donating pair of electrons. Pairs of electrons. तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो डोनेट करता है, वो देता है अपने पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म बॉन्ड्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट ऑप्शंस वन बाय वन. पहला हमें दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए, सोडियम बाइसल्फाइड. इफ वी टॉक अबाउट सोडियम बाइसल्फाइड और उसका कीटोन के साथ रिएक्शन, इट इज एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सपोज हमारे पास ये है स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इज NaHSO4, NaHSO3 with a negative sign and Na के पास positive sign है हमारा, and it is reacting with the aldehyde or a ketone. So let us just get it reacted by aldehyde. Carbon is positive, polarity is carbon की polarity positive and oxygen की negative, and this will get added to sodium bisulfite and then it will form RCHSO3 NaOH. This will attack the carbon bond and it will get reacted. तो हमारा ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा. अब जब कीटोन्स में सिर्फ मिथाइल कीटोन रिएक्ट करता है सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एंड कोई और कीटोन रिएक्ट नहीं करता है ड्यू टू ओवरक्राउडिंग, क्योंकि और कोई अगर कीटोन रिएक्ट करेगा तो इट विल ओवरक्राउड, सो नथिंग रिएक्ट्स विद इट. सो हमारा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स do form crystalline sulfides, though only methyl ketone form पर बनाता है crystalline derivatives with sodium bisulfite. तो ये हमारा eliminate हो गया ऑप्शन. Now let us talk about B option, which is phenylhydrazine. B, phenylhydrazine. अगर हम phenylhydrazine के बारे में बात करें तो phenylhydrazine का कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है ऐसा. And then an NH2 group attached to it. तो अगर हम इसे रिएक्ट कराएं with aldehyde या फिर कीटोन, so it will form a structure like this. हमारा ऑक्सीजन जो यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो H2 के साथ अटैक करेगा और फिर यहाँ पे हमारा H2O निकल जाएगा and we will be left with something like this. ये ऊपर को let us just, ये हमारा N double bond R. So this will be formed. This is our phenylhydrazine. So ये भी जो हमारा कंपाउंड है या फिर कह सकते हैं कंपाउंड, this also forms a crystalline derivative with aldehyde और कीटोन. So ये भी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. This will also get eliminated. Now let us talk about C option, which is semicarbazide hydrochloride. Semicarbazide hydrochloride. Now if you talk about semicarbazide hydrochloride, तो अगर
हम इसका रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड के साथ कराते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इसका रिएक्शन कराया एसिटाल्डिहाइड के साथ, सेमी कार्बोजाइड, then it will form acetaldehyde semicarbazole. So this will be the structure of it, NH, NH2. तो हम देख सकते हैं हमारा एसिटाल्डिहाइड which is an aldehyde is reacting with semicarbazide to form acetaldehyde semicarbazole. Semicarbazole. तो अगर हम बात करें तो ये भी हमारा डेरिवेटिव प्रकार है। पहले हम तो कॉमन चीज देखते हैं। तो हमारा सब जो भी है सेमी कार्बोजाइड है, फिनाइल हाइड्रोजीन है या फिर फिनाइल कार्बोजीन है, इन दोनों में हमारा नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। सो वी नो नाइट्रोजन is a good nucleophile. So it can form a crystalline derivative with aldehyde and ketone easily. Is a good nucleophile because it has unpaired electron pairs to give away, to donate. So is a good nucleophile. Nitrogen is a good nucleophile which is present at phenylhydrazine and semicarbazide. So let us talk about the last option which is, तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया बिकॉज इट फॉर्म्स क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव। तो लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट ऑप्शन जो है हमारा डाईहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट। अगर हम डाईहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट की स्ट्रक्चर की बात करें, डाईहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट, तो जो हमारा डाईहाइड्रोजन सोडियम फॉस्फेट में देयर इज, जो हमारा फॉस्फेट आयन है, इट डज नॉट हैव एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाता है। लेट अस सी इट्स स्ट्रक्चर फर्स्ट। ये हमारा फॉस्फेट आयन है, OH, वन साइड टू H, डबल बॉन्ड O, OH, ONA. So this does not have, phosphate ion does not have phosphate does not have any lone pair of electron. बाकी सब चीजों में हमने बाकी सब रिएक्शंस में हमने नोटिस किया जो हमें कंपाउंड्स दे रखे हैं, दे कंटेन अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, so they can act as a nucleophile. So it cannot act as a nucleophile. जो हमारा डाइहाइड्रोजन which is NaH2PO4, dihydrogen sodium phosphate does not react with aldehydes or ketones. So this will be the correct answer for the question that is given to us because it does not form any crystalline derivatives with aldehydes and ketones.
बाकी सब हमारे क्रिस्टलाइन डेरिवेटिव्स बना लेते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोफाइल इन देम. So dihydrogen sodium phosphate will be the correct answer. I hope you understood the question well. Best of luck.